अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना ख़्याल भी रख रहे होंगे। आज सैटरडे ऐवान इरशाद का सिलसिला और हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वो खुद ही अपनी ज़बानी हमें अपनी कहानी बताएँगे। मशहूर और मारूफ़ प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं पीजी फ़िज़िक्स एनआईटी श्रीनगर से और आम तौर पे लोग इनको सिंगल मैन आर्मी या फिर कोहिनूर कश्मीर कहा जाता है। सो मैं उनको स्क्रीन पे अपने साथ जोड़ना चाहूँगी प्रोफ़ेसर मोहम्मद अशरफ शाह, एचओडी पीजी फ़िज़िक्स एनआईटी श्रीनगर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बेनिशी। सर, हमारा जो ये सिलसिला है ऐवान इरशाद का, इसमें हम अपने गेस्ट्स की लाइफ जर्नी के बारे में पूछते हैं, सुनते हैं कि उनने अपनी शुरुआत कहाँ से की, शुरू से शुरुआत के बारे में पूछते हैं और वो जिस भी फ़ील्ड में अपनी महारत हासिल की है, उनकी इंस्पिरेशन क्या थी और अगर वो अपनी अचीवमेंट्स के ज़रिए हमारे नाज़रीन को इंस्पायर कर सकें, तो हमारी कोशिश यही रहती है। तो मैं आप ही के पास, आप ही के सामने, आप ही से सवाल पूछूँगी। मोहम्मद अशरफ शाह, एचओडी फिजिक्स पीजी डिपार्टमेंट, फिजिक्स के बारे में जो ये इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी कैसे बना? ये बेनिश जी, कबल इसके कि मैं उसकी तफसील दूं कि ये हयात जिंदगी कैसे गुजरी। अभी 52 साल का हूं मैं, लेकिन एक वाक़ा जरूर बता दूंगा कि हमारे पास्ट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम वाज एड्रेसिंग somewhere in Harvard University, United States of America. So he was talking about his achievements, and we all know he's full of credentials, having done good things throughout his life. He was talking about that Agni, he was talking about many satellites, he was talking about many social things. And then he was a president. After presidentship, he went for lecturing to the universities abroad and well within the country also. May Allah open the door of heaven for him. He died during lecturing in a university, well within the country. और फिर ये भी देखना है उस लेक्चर के लिए जाने के लिए वो गाड़ी में सफर किया था इन्होंने अराउंड प्रोबेबली 8 hours. सो उस दौरान जब वो लेक्चर दे रहे थे हार्वर्ड में, तो एक लेडी खड़ा होगी ऑडियंसेस में से, कलाम साहब, यू हैव डन दिस थिंग, यू हैव डन दिस थिंग, यू हैव डन दिस थिंग, सर व्हेन डिड यू गेट ए ब्लेस? आजमी साहब, डू यू नो द ब्लेस? अगर आप बताएं तो ज्यादा द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए हैप्पीनेस शायद हर एक की जिंदगी में आया होगा जब खुशी से आंसू आते हों, जब खुशी से आंसू आते हों। तो कलाम वाज गिवन दिस क्वेश्चन, सर कलाम, वो खुशी के आंसू कब थे? आपने तो बहुत सारे काम किए थे, व्हेन डिड यू गेट ए ब्लेस? तो जवाब ये था कलाम साहब का, lady was asked to sit down, she listened and the whole audience listened. कि मैं एक हॉस्पिटल गया था, कलाम कहते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल गया था हैदराबाद में, यह ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था। तो जब मैंने विजिट किया तो वहां पे ग्राउंड में बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स थे, बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स थे। और पोलियो पेशेंट्स को उन दिनों में जो है जब लिम्स हम लगाते थे वो आयरन की लिम्स होती थी, बड़ी हैवी लिम्स होती, बड़े, तो उस वजन की वजह से वो लोग जो है वो पोलियो पेशेंट्स ना ही वॉक कर सकते थे ना ही चल सकते थे, वो घसीट के लेते थे अपनी उन टांगों को। So they were crawling and very terribly because of the heavy weight. बड़ा हैवी वो आयरन लिम्ब रहा करता था। तो कलाम ने कहा कि जब मैंने वो हाल देखा तो मैं बड़ा परेशान हो गया। I immediately went back to my office, to his laboratory, asked his colleagues to come up. I have seen a terrible situation with the patients at hospital. Is it possible? Kalam was saying to his colleagues in his laboratory,
is it possible to replace this heavy limb of iron, जो ये वजनी लोहा इनकी टांगों में लगा हुआ है, क्या हम उसे लो वेट मटेरियल से लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं? So one of his students said that, sir, we have used one material which is having a very less weight, जो हमने अग्नि में लगाया था, क्या हम उससे रिप्लेस कर सकते हैं? Kalam was very intelligent. He said yes. So the material was tested again. Doctors were invited, and all those limbs जो iron limbs थे, उनको replace किया गया है with the limbs of that material which has been used in Agni. तो कलाम कहते हैं कि जब मैं दूसरी बार गया, जब हम लोगों ने उन सब लोगों की वो लिम्स रिप्लेस कर ली, जब मैं दूसरी बार गया, तो वो सब लोग खेल रहे थे, कुछ फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ साइकिलिंग कर रहे थे और कुछ दौड़ रहे थे. तो सो आई गॉट ए ब्लेस. मेरी आंखों में आंसू आ गए, वो खुशी के आंसू थे. सो दैट हैपेंड. तो आपने बीनी जी अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि सारे कामों में when did I get a bless? So I will say it, I got the bless when I initiated the PM's program. PM has launched a program in 2009 for the bright students of the country. So I am the only one. Probably the NIT Srinagar is the first one among 30 NITs who conducted 10 Inspire programs for the bright students of the valley. 10th class के toppers जो होते हैं, mostly they are 500 out of 500 students. Students having 500 out of 500, 99%, 98%. उनको हमने 300 के बैच में लाया, NIT में बिठाया, 5 दिन उनको रोका, and then we invited eminent professors across the country and asked that eminent professors to interact with those students. तो 300 करके तकरीबन 10 प्रोग्राम हमने किए. Around 3,000 students, toppers were benefited. And most of them you see them. अब माशाल्लाह वो आए होंगे, हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी आए होंगे. Most of them have entered the good medical colleges. Most of them have entered engineering colleges. Most of them have entered research institutes. तो मेरे दिल को वो खुशी लगी है कि वो प्रोग्राम हमने करा लिया at NIT Srinagar. And I am the first one who handled that program single-handedly. That is why you're called the single man army. Yeah, that has been given. This title has been given to me by the IIT Kharagpur people. So they once wished to organize one event in collaboration with NIT Srinagar. So when their team visited, so I was doing many things alone. So they were very apprehensive that how this 5 days event, international conference, will be held. So when it was held at the SKICC, and probably who was the chief guest? Who was the chief guest? Probably the governor. And then at the last, the coordinator said, oh, I have given him the title of the single man army. And he wrote it on the certificate. That is a single man army. So that's the moment of bliss. Yeah, that is the moment of bliss. Yeah, that's the moment of bliss. और दूसरा जो है हमारा NIT around 60 में बना हुआ है. From 60 up to 2015, we were not having postgraduate program. So I am lucky to have in good books of my seniors, in good books of my officials. So the director saab, I was in good books of the director. I convinced him. मैंने उसे जो है तारुफ दिया. मैंने कहा जम्मू यूनिवर्सिटी में 50 लड़के MSc फिजिक्स करते हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में MSc फिजिक्स 50 लड़के करते हैं, तो क्यों ना हम 25 बच्चों को ले लेंगे यहाँ पे MSc फिजिक्स में. We are having shortage of physics students, and then physics is needed everywhere. अभी एक आर्टिकल आया था 2-3 महीने पहले, that got viral and I received many appreciations for that. Give physics a chance. आप इसको गूगल में डाल दीजिए, give physics a chance.
तो मैंने उन्हें कन्विंस किया, that is मैंने what I उन्हें was कन्विंस asking you in किया, the first thing. मैंने उन्हें जी, जी। कन्विंस किया, सर हम 25 स्टूडेंट्स का बैच ले लेंगे हुँ, हुँ। MSc Physics में. Believe me, within probably less than a month, it was approved by the board, and now we have around 7 batches have passed out from for NIT Srinagar. माशाल्लाह। And because of that post-graduation program, we got जी। this year first project of 2 crores of rupees because running that project. So first is हुँ, a हुँ। project of the Department of Science and Technology, the prestigious project which has been granted to us during my headship. माशाल्लाह। So you should मेरा ask आपसे me सवाल when did you get a ऑफ bless कोर्स आई again? Yeah, नहीं, please. ब्लिस को लेके नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था क्योंकि जब हम आम तौर पे नॉन मेडिकल की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं या फिज़िक्स की बात करते हैं, क्वांटम फिज़िक्स की बात करते हैं, मोस्टली 90 में से 100 में से आई वुड से 20-30 चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, जिनको ट्रूली इंटरेस्ट होगा फिज़िक्स, क्वांटम फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में जानने का, समझने का। मैक्सिमम आजकल के जो बच्चे हैं, वो इसलिए फिज़िक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि नॉन मेडिकल में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास ये है मैंडेटरी। सेकेंडली क्योंकि हमारे को जब हम लोग करियर गोल्स की बात करते हैं, वी हैव ईदर मेडिकल और नॉन मेडिकल। पीपल डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो Yes, 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 फिज़िक्स yes. जब हम I बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीडे लाइफ। हाउ डू यू मेक इट Hmm. इंटरेस्टिंग? आपका इंटरेस्ट कैसे बना? वाज़ इट अ प्रैक्टिस दैट योर फैमिली फॉलोड कि बेटा आपको इंजीनियरिंग ही करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है तो चलो फिज़िक्स पढ़ लो और फिर आपका इंटरेस्ट जागा या आप शुरू से वो छोटी-छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते थे कि ये क्यों है, कैसे है, इसकी फिज़िक्स क्या है, फिज़िकैलिटी क्या है, उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट ना बना? दैट्स व्हाट आई बेनी जी ऐसा नहीं था. The reality is that I am blessed with many things. My whole studies have been uh, had been under the supervision of my uncle. So वांट। he was residing near to Kausar Salam's residence, जो ओके। इनका आबाई वतन है. And my जी। schooling had been there only. So हुँ, my हुँ। schooling had been in Baramulla, एक अच्छा गांव है सिंहपोरा करके. So my जी, uncle जी। was stationed here. So my studies were under the supervision of my uncle. तो सिंहपुरा स्कूल की ये हालत थी कि उसमें उस स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल था, बड़े अच्छे उस्ताद किराम थे. And that was an amalgam of many कश्मीरी पंडित, सरदार जी का और मुसलमान टीचर्स थे. One of them I हुँ, remember, may Allah keep him safe, बिंद्रू सा बारामूला के थे. हुँ, हुँ। So he was a good friend of my uncle also. So he said to him, it convinced him, नहीं, अशरफ को जो है मेडिकल नहीं नॉन मेडिकल पकड़ना होगा. हुँ, I हुँ। was a very good student during my school days. तो मेरा हेडमास्टर भी मुझे शाफुल कहता था. हुँ, हुँ। दाशरू साहब उनका नाम था. बड़ा प्यार करते थे. Because I was topping all those students, those who used to come from even that St. Joseph school. तो हुँ, हुँ। बड़ा अच्छा था. तो उन दोनों जो है एक जो है पंडित जी जो थे, नहीं मैं बिंद्रू साहब तो थे ही, दूसरे एक भी थे. तो बिंद्रू साहब ने कहा कि नहीं, इनको नॉन मेडिकल पकड़ना है, इनको मेडिकल नहीं पकड़ना है. तो आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम देयर. तो फिर 9th 10th में अच्छे मार्क्स आए. 10th में 11th हुँ, 12th हुँ। में थोड़ी सी जो है मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं अब ये घर में पड़ेगा. तो आई गॉट डिटेच्ड लिटिल बिट. तो हुँ, हुँ। थोड़ा सा जो है अपने आबाई घर में थोड़ा सा कम मिलता है टाइम पढ़ने का. बट स्टोरी वेंट ऑन. आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बारामूला डिग्री कॉलेज. दैट वाज आल्सो accompanied with my electronics. So physics and then electronics, these are interconnected subjects. येस। Then I left, then I went to Kashmir University. From Degree College, Baramulla, we were the 2 students only who got admission in university. I do remember. One was in statistics and I was in physics. हुँ, हुँ। During 92, even. The strictness was so. After that, immediately after my post-graduation in physics, I went to Jamia Millia Islamia. I met many good teachers. So my teacher was there. He had his teacher in Delhi University. So I हुँ, worked हुँ। in Delhi University. I got the degree from Jamia Millia Islamia.
So I was blessed throughout my life to have a good people in my life. And So what is immediately when when I completed my PhD in physics, yeah, I got a job on the second day in NIT Srinagar. Believe me, when I went to NIT Srinagar, the principal sir was there. Trustee sir, may Allah keep him well always. I mean, तो ट्रस्टी साहब ने मुझे कहा कि मैंने ट्रस्टी साहब से रिक्वेस्ट किया, सर मैंने पीएचडी किया है, मैंने सबमिट किया है, अभी मैं बेकार हूं तो मैं पढ़ाना चाहता हूं. तो उन्होंने कहा कभी आ जी, जाइए एप्लीकेशन लेके. बट बिलीव मी, द मोमेंट आई रीच्ड गेट, उन्होंने अपने पियान को भेजा. तो पियान मुझे बुला रहा था पीछे से बैक. मैंने कहा मेरे से कुछ गलती हुई है, तो प्रिंसिपल साहब मुझे क्यों बुला रहे हैं. प्रिंसिपल साहब ने कहा नहीं, एप्लीकेशन खुद ही हम लिखेंगे, आप जाओ पढ़ाओ, क्लास ले लो. तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स वाज आस्क्ड, मेरा जो हम मनसब था उन दिनों अंसारी साहब, उनको कहा गया कि शाह साहब को ले लीजिए, इन्हें क्लास दे दीजिए, ये पढ़ाएंगे, हम देख लेंगे इनकी परफॉर्मेंस, वी विल सी फॉर 3 months. तो 3 महीने के बाद एडवर्टाइजमेंट निकला, आई वाज टेकन. सो देन द जर्नी स्टार्टेड कि मैंने एनआईटी श्रीनगर में क्या किया. क्या किया. Many So good things I have done at NIT Srinagar, many good things. And now जी, मतलब मुझे याद है, ये सारा सिला मेरे उस्तादों को जाता है जो मेरे स्कूल टीचर थे, जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, आपको नॉन मेडिकल पढ़ना है, आपको मेडिकल नहीं पढ़ना है, एंड देन यू हैव टू डू फिजिक्स. फिर एक मुझे what is याद है, most testing thing that बिनी जी you बिनी जी बिनी जी बिनी जी done? मेरे जी, अंकल जी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वाज अ जी, विजनरी. Do you know the difference between a visionary and an educated person? We have many educated persons, we have many politicians, we have many bureaucrats, but we have few visionary people. My uncle is also a visionary. तो वो पूछते रहते थे लोगों से कि फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, बायोलॉजी क्या है. तो मुझे याद है, वन ऑफ रिलेटिव रहतर साहब करके, अब्दुल रशीद रहतर, उन्होंने मेरे अंकल को ऐसे समझाया, बोला फिजिक्स आसमान है और मैथमेटिक्स जमीन है, बाकी सब्जेक्ट जमीन है, तो आप आसमान की तरफ जाओगे या जमीन की तरफ जाओगे. So those were the things of inspiration for me. So I went on in this subject. जी. And Alhamdulillah, Honey, I'm doing good. माशाल्लाह. Please. हर एक सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट अगेन जैसे मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा फिज़िक्स के हवाले से, सिंस यू हैव बीन लिविंग, ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग थ्रू फिज़िक्स ऑल योर लाइफ, इट्स बीन 22 प्लस इयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस है, पढ़ाई उससे पहले का था. तो तकरीबन मैं कहूँगी 3 तिहाई से ज़्यादा वक़्त हो चुका है आपने फ़िज़िक्स के साथ गुज़ारा है। तो ये मैंने जो ये एक हिंदी फ़िल्मों का डायलॉग अंग्रेज़ी में बोल दिया कि आप लिटरली खा-पी भी रहे हैं फ़िज़िक्स के साथ। सो Yes. फ़िज़िक्स में क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है, सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ नया करना है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने कुछ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में कुछ आपने कंट्रीब्यूशन दिया था और आज 2005 की बात है और वो आज यूज़ हो रहा है बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस, मैं कुछ उसके बारे हाँ, I've been Binishi, I have been saying that I'm blessed with good people. You know, the Prime Minister's scientific advisor, Professor C.N.R. Rao. में हुँ, I got somehow connected with Professor C.N.R. Rao. He's one of the legend and a Nobel laureate nominee also. So he's in a Bangalore. He has the government has opened up an institution on the Jawaharlal Nehru Institution. I got in connection with him. So एक नया branch आया in 2000 when I joined NIT Srinagar, 2 decades before. 2 decades before, एक नया branch आया physics में. We call that branch as a nanotechnology. When I was connected with Professor C.N.R. Rao, I got हुँ, fascinated with this field. एक नई टेक्नोलॉजी आई है वजूद में, which is going to bring a revolution in the history of a science, which is going to हुँ, bring a revolution, a new life to the physics. And then this new technology is about the small materials. All things. अभी मैं अपने घर में देख रहा था, मेरी बेटी खा रही थी वो विटामिन्स, तो उसको भी लिखा हुआ था कोटिंग, नैनो कोटेड, हुँ, नैनो कोटेड विटामिन्स. तो मोस्ट मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, विद इन दिस डिकेड
within this decade, by 2030, probably half of the products will be nano-made. Probably half of the products, including our clothes, they will have a nano coating, including that furniture, including that utensils. ये एक ऐसा फील्ड था जो मुझे बड़ा फैसिनेट कर पाया, और इस फील्ड को जानने के लिए कुछ माइक्रोस्कोप्स की जरूरत थी, जिनको मुझे प्रोफेसर CNR राव ने दिया इसका तस्वुर. So when I came back to NIT Srinagar, मैंने अपने डायरेक्टर साहब को, अल्लाह की से भट्ट साहब थे और शशि कुमार पांडे साहिबा थी, तो मैंने उनको कन्विंस किया कि सर, देयर इज अ न्यू माइक्रोस्कोप in whole North India. We do not have that microscope, electron microscope. तो हमें लाना चाहिए इसको. So they got convinced. Luckily एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हमें मिला 20 करोड़ रुपया का. So I was given 1 crore rupees. Yeah, it was a World Bank project undertaken. So I was given 1 crore rupees to purchase this equipment. Believe me, out of 20 crores, I was the only one who could purchase that equipment worth of 1 crore. It's around 90 lakhs, plus minus. Rest of the 19 crores of rupees were sent back to the World Bank after 3 years of a gap, with a remark that we are unable to spend this money. So I was the only one who spent that money, commissioned that electron microscope. People were saying that what this man has got, what is this? And including the director one said, oh, what is this bride about, all about? तो आज जो है, आज हमने 2 और खरीदे. आज लोगों को पता चलता है कि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंपॉर्टेंस क्या है और बाकी इक्विपमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है. So I was the one who established that laboratory, and I was the one who was educating that we should move to this field, nanotechnology. Then story went on. In 2010, I came up with a book of Science of a Sumal about the nanotechnology. Believe me, Binish, believe me, कुछ पिछले हफ्ते हमारा एक प्रोग्राम था, तो एक बच्चा आया मेरे ऑफिस में उस प्रोग्राम को कंक्लूड करने. दैट वाज अबाउट DST. बच्चा गुजरात का था, हमारा स्टूडेंट नहीं था, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया था. बोला सर मैं आपके साथ फोटो एक लूंगा. मैंने कहा इतना प्यार मुझसे क्यों हुआ है? बोला सर हम आपकी किताब पढ़ते रहते हैं, हमारे टीचर कहते हैं शाह साहब की किताब खरीदो. आज मैंने शाह साहब को खुद देखा, मैं आपके साथ एक फोटो लेना चाहता हूँ. So those are the blissful moments for me. अन्ना यूनिवर्सिटी में किताब को गिफ्ट देना था पार्टिसिपेंट्स को, कोई पार्टिसिपेंट्स कर रहे थे. Out of 15 books, my book was chosen as a gift in Anna University, where Kalam has read. So those are the moments for joy for me. Please go ahead. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सवालात तो अभी बहुत सारे बाकी हैं. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, पहले अगर आपकी इजाज़त हो एक छोटा-सा वक़्फ़ा लेंगे, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो भी मैसेजेस करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम के बीच में मैसेजेस नहीं दिखाते हैं ऑडियंस को. तो हम वक़्फ़ा ले लेते हैं और वापस आएँगे. नाज़रीन, आप हमारे साथ बने रहिए और ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, एक छोटे से तिजारती वक़्फ़े के दूसरी तरफ. गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश. सेमटेक सिमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत. नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने का और हमें वक़्त देने का. हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं स्क्रीन पे.
मैं उनको वापस जोड़ना चाहूँगी। शुक्रिया अशरफ साहब आपका हमें वक़्त देने के लिए। अशरफ साहब हम आपकी पब्लिकेशंस की बात कर रहे थे। आपने शुरुआत शायद से एनआईटी से ही पहली पब्लिकेशन की थी कुछ लैबोरेटरी साइंसेज़ को लेके और हम्म, अभी आपने लास्ट मुझे जहाँ तक याद पड़ता है सेफ वे टू नैनो टेक्नोलॉजी करके कुछ आपकी पब्लिकेशन आई है। व्हिच हैज़ बीन योर मोस्ट फेवरेट अमंगस्ट ऑल द हंड्रेड्स ऑफ योर पब्लिकेशंस और अगर कोई उसके कुछ खसूसी एक्सेप्ट्स या पॉइंटर्स जो आपको बहुत मज़ा आता है अपने स्टूडेंट्स को बताने में या सुनाने में, उसके बारे में कुछ बताइए? बड़ा अच्छा मैंने हाँ, बड़ा अच्छा आपने कहा वो जो है लेबोरेटरी फिजिक्स व्हेन आई एंटर्ड इनटू एनआईटी श्रीनगर तो हुँ, मैंने देखा हमारे बीटेक बच्चे थे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चे बड़े परेशान रहा करते थे कि हम जो है सर हम कौन सी किताब अडॉप्ट करें हम कौन सी किताब ले लें हमें जो है प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं हमने जो है ऐसा नहीं सीखा है बिलीव मी फॉर 1 ईयर आई सेट डाउन मैंने उनको कंपाइल किया सारे एक्सपेरिमेंट्स को खुद किया अपने हाथों से और फिर उनका एक मैनुअल बनाया उनकी एक बुकलेट बनाई दैट केम अप that was the first initiative at NIT Srinagar that हुँ, came up हुँ, in 2002. I received congratulations from my principal, from my students. और फिर जो है जम्मू में हमारा एक ट्रांजिट कैंप था वहां से खत मेरे पास अभी भी हैं मौजूद हैं हुँ, हुँ, उनके मुबारकबादी और फिर जब मैं व्हेन आई वेंट टू अब्रॉड तो फिर जब मैं आया मैंने कहा मेरी किताब को कौन पढ़ता होगा मेरी किताब को कौन पढ़ता बिलीव मी आई सॉ टू बुक्स इन अ हैंड तो एक ओल्ड एडिशन था एक न्यू एडिशन था बच्चों के हाथ में so that is settled with the hands of children वो बुक मैंने पहली कर ली और जब मैं आज भी कहता हूँ बच्चों को कि मेरी नैनो टेक्नोलॉजी की बुक इतनी सीधी सादी और सिंपल है इवन इफ नॉन साइंटिस्ट नॉन फिजिसिस्ट विल रीड इट इवन द बायोलॉजिस्ट रेड दैट बुक तो वो इतनी आसान लफ्जों में मैंने लिखी है सिंस आई वाज इन सऊदी अरबिया उन लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर रहता है हुँ, तो हुँ, मैंने उस अंदाज में बनाया था उस किताब को सो आई ऑलवेज एजुकेट आई ऑलवेज रिकमेंड गो थ्रू दैट बुक दैट्स वन ऑफ द good things I have done in my life come up with a book which is so easy to read which is so easy to understand जी। and then अशरफ साहब I do have यस, also 100 publications all of them are scopus you can download them through the scopus google and हुँ, then हुँ, also you'll be glad to know हमारे एक एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं आई एम एट द टॉप माशाल्लाह। आई एम एट माशाल्लाह दैट्स रियली नाइस। आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में जब बात की है तो आपने कुछ अरसा बैंगलोर में भी प्रोजेक्ट्स के साथ कुछ दिल्ली में अ, आप काफ़ी अरसे के लिए शायद सऊदी किंग खालिद यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया में रहे हैं। सिंगापुर में आप कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए गए थे, फेलोशिप के लिए गए थे। सो हाउ हैज़ दैट एक्सपीरियंस बीन जब आप वापस आते हैं अपने मुल्क, अपने शहर में और इतनी सारी ममालिक में या शहरों में आपने काम किया अलग-अलग लोगों के साथ, तो कुछ ख़सूसी आपने नोटिस किया हो जो हमारे यहाँ पे नहीं था और आपने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए थी, थिंग्स कुड बी बेटर? ने मैंने जैसे पहले अर्ज किया when I got connected with Professor Sena Rao so हुँ, हुँ। later on he fall in love with me तो वो कहते थे शाह साहब को मेरे पास बिठाओ so I हुँ, got the हुँ। concept of new technologies what is happening in the world so because of that I got electron microscope well in time तो जब लोगों को उसका कंसेप्ट भी नहीं था हुँ, नॉर्थ हुँ। इंडिया में कंसेप्ट नहीं था नॉर्थ इंडिया में मैं एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया जी। में उसका कॉन्सेप्ट नहीं था प्रोबेबली दिल्ली में एक दो इंस्टीट्यूशन में था वो माइक्रोस्कोप हुँ, हुँ। मैंने बैंगलोर से बहुत सारी चीजें सीखी और फिर मैं 2013 में फिर से चला गया शेख सकर फेलोशिप है वहां पे अबू धाबी ने लॉन्च किया है अबू धाबी स्पॉन्सर कर रही है तो आई गॉट दैट फेलोशिप under that fellowship I worked again with Professor Sena Rao I got publications with him then I हुँ, went to हुँ। Singapore for the training of this equipment तो जिस कंपनी ने हमें ये प्रोवाइड किया था तो दे स्पॉन्सर्ड माय ट्रिप टू सिंगापुर then all of out of I can say
मर्जी के खिलाफ, मेरे ऑफिशियल्स की मर्जी के खिलाफ आई वेंट टू सऊदी अरबिया कुछ टाइम के लिए। तो बड़ा पहला मौका था। बिलीव मी, when I shifted to my new house, I got a mail कि आपका इंटरव्यू है दिल्ली में। तो I made preparations for Delhi interview. 3 days back I got another mail कि शाह साहब आपका अभी इंटरव्यू नहीं होगा, आप डायरेक्ट आ जाइए हमारे पास। Knowing my credentials, academic credentials, आपका कोई इंटरव्यू दिल्ली में नहीं होगा। Still I went to दिल्ली, तो उन्होंने डीन साहब आए थे, वहां के डीन साहब इंटरव्यू करने। तो we had a tea, we had इंटरव्यू। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चले हमारे साथ ही चलिए, आप कश्मीर नहीं लौटना है वापस। अब हमारे मैंने कहा नहीं, घर वालों से पूछूंगा, मैं आ जाऊंगा जरूर। तो आई वेंट। तो देन आई वाज ब्रॉट बैक कि आपने मशीन 1 करोड़ की लाई है, इसको कौन चलाएगा, यू कम बैक। सो आई केम बैक आफ्टर 9 months, betrayed their trust. तो 2009 में फिर से एक मौका आया कि फिर से अपॉइंटमेंट हो गई सऊदी अरब की दूसरी यूनिवर्सिटी में, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जिद्दा में, जो हरमी पार्क से बिल्कुल 40 मिनट का डिस्टेंस है, 40-45 मिनट का डिस्टेंस। तो मैं फिर से चला गया, बावजूद नाराजगी मेरे ऑफिशियल्स की कि नहीं जाना है, तो बटालिया। तो 2 साल 2.5 साल वहां पे गुजारे, बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। एंड देन देयर वाज एन एमलगम ऑफ, जैसे यहाँ पे मेरे सिंगापुर स्कूल में, बारामूला स्कूल में सरदार साहिबान भी थे, पंडित जी भी थे, मुसलमान भी थे। तो वहां पे हर किस्म के हर कंट्री के लोग थे। जॉर्डनियन थे, ईरानियन थे, इजिप्शियन थे, और हमारे जो है अबू धाबी के कुछ लोग थे, पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे। तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस मिली, बड़ा अच्छा प्यार मिला वहां पे। तो 3 साल के बाद मैं वापस जब लौटा, तो मैंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पे। आपके इनिशिएटिव्स की बात करें तो बारामूला में आपने कुछ सुपर 30 करके एक इनिशिएटिव लिया था। वो क्या हाँ, यस कॉन्सेप्ट यस। था? वो कैसे सुपर ख्याल आया? 30 का, उसके बारे में या बताइए। सुपर 30 का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है। सुपर 30 का कॉन्सेप्ट एक जो है एनजीओ करके बिहार से थे, तो उनकी डेथ भी हो गई पिछले साल। मे अल्लाह ओपन डोर्स ऑफ हेवन फॉर हिम। आमीन। तो उनका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर का कॉन्सेप्ट था जो बॉर्डर पे था, उड़ी बॉर्डर पे। आई मेट हिम वंस, आई फॉरगेट हिज नेम। तो उन्होंने कहा था कि मैंने इतने साल उड़ी में गुजारे हैं, तो मैं इन लोगों को क्या दे दूं। ही गॉट कनेक्टेड विद सुपर 30 ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग आए, तो उन्होंने लेटर लिखी हमारे डायरेक्टर को कि हमें चाहिए कोई जो हमें गाइड करेगा इसमें। So I was told, along with one of my colleague, Professor Niyaz from mathematics was. So we went Baramulla for its launch. 15 कोर के जनरल साहब थे, सरदार जी थे। I do, क्या नाम था, महेंद्र, हरी सरदार जी थे। तो he was there and I was on the stage. I shared stage with him. तो ये हमने लॉन्च किया। तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम ट्रेनिंग कराएंगे, तो हम इन बच्चों को जो है आईआईटी के लिए ट्रेनिंग कर लेंगे। मेरा बड़ा सीधा सादा सवाल था बारामूला वालों को। मैंने कहा, आजादी से आज तक अगर हम अपने बच्चों को गिनेंगे, मुझे नहीं लग रहा है 100 बच्चे आईआईटी में गए होंगे, 100 बच्चे। और अगर इनका ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे 30 बच्चों में से 5 बच्चे, 10 बच्चे या 2 बच्चे आईआईटी में जाते हैं, तो इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या होगी। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस थिंग। तो मैंने उनको होल हार्टेडली सपोर्ट किया। Then that started there in Baramulla, but that was stationed there in, ये जो है हमारा बटमालू का टोटो ग्राउंड, वहां आर्मी का वो कैंप है, वहां पे कुछ जगह है इनका आर्मी का। तो that started there, that is probably still there. तो जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं चला जाता हूँ, I do help them. तो जितना भी मुझसे हो सकता है। लेकिन मुझे खुशी ये है कि जब मैं एनआईटी में हूँ, तो एनआईटी वाले बच्चे कभी कभार कहते हैं कि सर, हम वही सुपर 30 वाले बच्चे हैं जिनको मैं उड़ी से हूँ, मैं कुपवाड़ा से हूँ, मैं दूर दराज इलाके से हूँ,
लेकिन हमने सुपर 30 में पढ़ा। जी। अशरफ साहब, आपका इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो जी, हेलो। जी, जी। जी। तो वो बच्चे, सुपर 30 के बच्चे अब हर जगह फैले हुए हैं, हर एनआईटी में है, हर आईआईटी में है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आई हैव सपोर्टेड फॉर गुड कॉज। हालांकि लोग कभी कभार क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो आर्मी के साथ था ये। मैंने कहा आपको वो ये चीजें याद नहीं है कि विनी जी, पता नहीं मुझे आपका पूरा पता नहीं है। मेरे पास व्हाई डू मेरे यू पास बिलोंग, मैसेजेस आ रहे व्हाई हैं, डू यू हमारे बिलोंग। प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगी। सेंट नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना? नैनो एक बात टेक्नोलॉजी। जरूर सुनिए, एक जी, बात जी। जरूर सुनिए। तो आई वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट कि ये आर्मी का प्रोग्राम था, एनजीओ के साथ, वाई सपोर्टेड। तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि वी डू हैव एन अपराइट ऑफिशियल्स इन कश्मीर। मोस्ट ऑफ द अपराइट ऑफिशियल्स आर फ्रॉम सैनिक स्कूल नगरोटा, दैट इज रन बाय द आर्मी। तो हम लोगों को उसका मरहूनी मिन्नत होना चाहिए कि हाउ दे ग्रूम अवर चिल्ड्रन। हमारे जी, कश्मीर में जो भी ऑफिसर्स हैं, दे आर फ्रॉम सैनिक स्कूल नगरोटा। बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। जी, जी। मैं कह रही थी, आपने प्रोजेक्ट सेंट के बारे में बात किया, नैनो हाँ, टेक्नोलॉजी। यस यस और यस। एक और सोनार और ब्रेन करके कुछ आपने प्रोजेक्ट्स प्रपोज़ हाँ किए थे, वो हाँ, ये मेरे ख्वाब है। तो मैंने गवर्नर साहब के, एलजी गवर्नर साहब के भी और एलजी साहब के भी मशीर रहे हैं, के शर्मा जी। he was secretary to education also. So I convinced him about that. We had a meeting. It came up in news also, government news also, कि मैं श्रीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी खोलना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट जो है उसे स्पॉन्सर करे। मैंने यूनेस्को को भी लिखा था, हुँ, हुँ। लेकिन दैट स्टिल इन डोल्ड्रम्स। मैं अब आखिरी बार उसको कोशिश करूंगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी लिखूंगा उसके बारे में। अगर वो सेंटर होता तो दैट कुड हेल्प और मेडिकल कॉलेजेस और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड देन टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और फिर स्कूल वालों के लिए भी बड़ा अच्छा रहता वो आउटरीच प्रोग्राम के लिए। सो दैट कुड बी एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस। ये है श्रीनगर एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इसी का नाम मैंने सेंट दिया था, हुँ, हुँ। सेंट। तो ये मेरा ख्वाब ही है अभी। तो इट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, इट हैज बीन कंसीव्ड कि ये होना चाहिए, सो दैट इट विल बी एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी। जो भी हुँ, रिसर्च हुँ। कर रहे हैं इस नैनो टेक्नोलॉजी में, उनके लिए बड़ा अच्छा हाउस रहता है, ये जॉइंट हाउस रहता। और इस नई टेक्नोलॉजी में ये है, इस नई फिजिक्स में ये है कि इसके टूल्स और इसके प्रिंसिपल सेम है, इसलिए इसमें कोई बैरियर नहीं है, ना ही मेडिकल कॉलेजेस के लिए, ना ही एग्रीकल्चर कॉलेजेस के लिए, और ना ही हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। पीपल वर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसिप्लिन। बताए और बताए। जी। जाने से पहले मैं आपसे यही सवाल पूछूँगी, जो हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हम आपको देख रहे हैं, फिज़िक्स एज़ अ सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए उनको? क्या फ्यूचर है उनके लिए? एक मैसेज। मेरी मैसेज ये है, मैंने कहा आपको, एक रिसेंटली एक आर्टिकल आया है, गिव फिजिक्स ए चांस। उसमें मैंने एक एक करके ये लिखा है कि ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए क्यों जरूरत है, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्यों जरूरत है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्यों जरूरत है, और ये हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरत है, और ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्यों जरूरत है। आजकल का जमाना, वो जमाना चला गया, वो रोट लर्निंग का जो हमारा जमाना था, वो उस पढ़ाई का जमाना खत्म हो गया। Unless and until you will not do things with your hand, nothing is going हुँ, to come out. सारी इंफॉर्मेशन आपको कोई एम्प्लॉय करना होगा, आप तो इंफॉर्मेशन गूगल से भी ले लोगे, लेकिन आप एम्प्लॉय करोगे उसी आदमी को जिसने अपने हाथों से किया होगा। एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट बाय डूइंग थिंग्स बाय हैंड। ट्रू। यू डू इट बाय प्रैक्टिकल वर्ड्स। मेरी मैसेज यही है, इसमें अच्छा फ्यूचर है, ये प्रॉस्परस सब्जेक्ट है। और मैं ये, मेरा ये मानना नहीं है, ये it has been calculated around 10 million jobs will be provided in physics through nanotechnology. इंशाल्लाह। China has आप started this new technology, new physics,
from class 6. So Inshallah. we should also do it. We should also. This is a prosperous field. This is an evergreen field, and this is a field where people can have their life prosperous and peaceful. इंशाल्लाह। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अशरफ साहब हमें वक़्त देने का और हमारे साथ अपनी लाइफ़ जर्नी शेयर करने का, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। आरएनए की पूरी टीम और नाज़रीन की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। बेनी नाज़रीन ये थे हमारे साथ जुड़े हुए प्रोफ़ेसर मोहम्मद अशरफ शाह एचओडी पीजी फ़िज़िक्स एनआईटी श्रीनगर से और ये बता रहे थे कि किस तरह से इनने अपनी लाइफ़ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं थ्रू फ़िज़िक्स और ये बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे थे, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और क्वांटम फ़िज़िक्स के बारे में। आप लोग भी अपना फ़ील्ड, अपना चॉइस, अपने इंटरेस्ट के साथ चूज़ करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ये ऐवान चलाते रहें और अपने गेस्ट के इरशादात आपको सुनाते रहें। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी है ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिएगा। फ़ेसबुक पेज, यूट्यूब या हमारा ट्विटर है। हमारा वेबसाइट है RNA www.rnakashmironline.com और हमारा सिस्टर कंसर्न भी है ट्विटर हैंडल द कश्मीर क्लैरियन। वहाँ पे जाके आपके मैसेजेस के ज़रिए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नए मौज़ू पे, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। इल्तिमास दुआ। अल्लाह हाफ़िज़।